chemistry, we'll start with the first chapter, states of matter. Apparently seems to be a very easy topic, but since we will be discussing MCQs side by side, so at times even an easy chapter has tricky questions. And secondly, when I'm trying to make it more and more important for you guys. Chemistry में language of chemistry is very important. If you know the concept, that's not enough. बाकी subjects में काम चलता है. Chemistry में the examiners are very specific about the choice of words. तो इसमें ज़रूर कोशिश करें कोई ऐसा word हो जिसमें मैं बहुत stress दे रहा हूँ, उसको आपने note करना है, ठीक है? Other than that, I'll share these slides so you don't have to worry. Anyway, we'll start with the first topic of chapter 1, which is kinetic model of matter. We have in total 4 topics. अच्छा, kinetic model of matter से start करते हैं. What do you think kinetic model of matter किस चीज के बारे में? What is this topic about? जी. Force of attraction between the particles is a part of it. What else does it tell us? आपका नाम क्या है? I forgot your name. Yes. Zuhaib. Anyone else? Kinetic model of matter. What is it about? जी. आपको क्या लगता है? Kinetic model of matter. Kinetic किसे कहते हैं? Movement. So basically, this matter, any matter, इसके जो particles हैं, ठीक है? Matter is made up of particles. No object is as a whole. If you see this object, it seems to be a one object, but it's made up of tiny particles which are joined together. If you see liquid, a glass of water seems to be one substance, but it's actually tiny particles. ठीक है? Kinetic model of matter हमें दो चीजों की बात करता है. ठीक है? One, Zuhaib, as you mentioned, it tells us about forces. कि किस state में कितना force है. And secondly, it tells us about the movement of particles. So kinetic model of matter हमें दो बातें बताता है. Forces and movement. Is this clear? हर state में forces और movement different है. Solid के अपने हैं, liquid के अपने हैं, gas के अपने हैं. So this is what the topic is about. It tells us about two things. Starting with solid. First of all, you should be able to draw solid. If I ask you to draw a state solid, how do you draw? You draw particles which are very close together, no gaps, and secondly, they should be aligned. This is how you draw solid. Is this clear? कोई question तो नहीं है? अच्छा, particles in solid, they are closely packed. बहुत basic बातें हैं. I'll quickly go through it. They have regular arrangement. मतलब ये बहुत aligned होते हैं. Randomness नहीं होती. If you look at, आगे हम देखेंगे sodium chloride वगैरह, they have a very regular arrangement. Line में होते हैं, aligned होते हैं. There are strong forces of attraction. देखें, if I am holding this marker या this pen, ठीक है? If I hold this point, the rest of the object is not going down. Why? Because they are holding each other very strongly. तो इसलिए मैं हालांकि यहाँ से hold कर रहा हूँ, but entire object is intact because of strong forces of attraction. ठीक है? अगर ये weak होते, liquid को मैं इस तरह hold नहीं कर सकता obviously. I need a container क्योंकि इसके forces of attraction are weaker. ठीक है? But the particles are not still. ये object still है? It is still, right? लेकिन इसके particles are not still. हमें naked eye को लगता है कि ये still है, but अगर आप इसको on a subatomic level देखें, none of the particle is standing still. They are all vibrating. ठीक है? Vibrate क्यों करते हैं वो फिर खैर different story है. But you need to memorize. Particles of solid are not still. They are all vibrating. They're not moving around. They can't move around. अपनी जगह पे सारे solid particles they are held together, but they're all vibrating. ठीक है?
What else? They are incompressible. And secondly, they have high density. जाहिर बात है solid में इतने ज़्यादा particles होते हैं. Density वैसे होती क्या है? When we say high density, what does density refer to? जी Zuhair? Almost there. Mass per. Anyone else? Density क्या होती है? किसी को idea है? Density फातिमा नाम है और आपका नाम? Prisha. Density is how much mass is occupied, yeah, how much mass a matter has in a certain volume. Per meter square नहीं, you mentioned square, per meter cube. ठीक है, we have to be very clear when we write our answers. तो density ये होता है कि if this is a certain space, how much mass is occupied, how much mass exists in this volume. तो solids का बहुत ज़्यादा compressed होता है, so it has high density. If we compare this with liquid का क्या difference होगा? If I draw the diagram, what do you think? Closely packed होगा लेकिन थोड़ा सा less closely. ठीक है? It will still be your right. Liquid भी करीब करीब होता है लेकिन आपने दो कि आपने your right थोड़ा सा irregularity show करनी. ठीक है? If you talk about description, particles are loosely packed, arrangement less है, forces of attraction are weaker, ठीक है, ये less strong होते हैं. और what about its motion? Kinetic model में we have to talk about motion of particles. तो motion इसका क्या होता है? Vibratory भी होता है and they move around. They can't stand still. What evidence do we have that they move around? अच्छा, और for example, if I have a glass of water, what evidence do we have कि particles movement में है? वो एक तो you are saying कि you flow it from one container to another, right? What if there's a still glass of या beaker of water? How can I prove कि the particles are moving? क्योंकि eyes को तो still लगता है. Let's say calm water है. Let's say I'm not changing any shape. It's there. What can I do to prove कि water के जो particles हैं, अगर बहुत ही घंटे बाद भी अगर आप देखें ना, they'll always be moving. But our eyes, to our eyes, they don't seem moving. ठीक है? Evidence ये है, at a drop of ink. ठीक है? What happens? It disperses, exactly. अगर आप, for example, if you add a drop of ink, ठीक है, तो ink क्या करता है? Streaks से बन जाते हैं. That's a clear evidence कि particles are moving. नहीं तो चाहिए था कि ink drop should have just stopped over here. तो particles, जैसे ही आप एक drop डालते हैं, they start to move, which means पानी already movement में था. Anyway, particles vibrate and move from one point to another. Liquids are very difficult to compress. थोड़ा सा compress होता है, not much. They have high density and they can flow. I think this is pretty basic. कोई point रह जाए, I'll share these slides and you can complete later on. ठीक है फातिमा? I'll share these slides anyway. Okay? अच्छा, if you talk about gases, gases को हम कैसे show करेंगे? Spaced out. So we'll show different particles, no arrangement. बहुत डिस्टेंस शो करेंगे, कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई इसमें डिस्टेंस कम नहीं है, वाइड डिस्टेंसेस इस तरह हम शो करते हैं. सो दे हैव लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम, नो अरेंजमेंट एट ऑल. ठीक है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे डोंट एग्जिस्ट. दे एग्जिस्ट इन हायर क्लासेस बट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. ओ लेवल्स में हम कहते हैं दे डोंट एग्जिस्ट. इसलिए अगर आपके पास एक ओपन कंटेनर है, गैस को अगर आप ओपन करते हैं, दे स्टार्ट टू मूव आउट, क्योंकि वो फोर्सेस ही नहीं है जो उसको होल्ड करें. आप ग्लास ऑफ वाटर या बॉटल ऑफ वाटर को ओपन करें, इट्स डज नॉट जस्ट सडनली कम आउट. लेकिन अगर गैस है, यू ओपन द बॉटल, इट सडनली कम्स आउट. अगर कलर्ड गैस है फिर इट्स विजिबल. व्हाई? बिकॉज देयर आर नो फोर्सेस. ठीक है? उसको होल्ड करने के लिए फोर्सेस वीक होते हैं.
but particles move around at high speed in random direction. ठीक है? इस वक्त आपको क्या लगता है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी होती है? एयर पार्टिकल्स इस वक्त, it has been measured in physics. What do you think roughly? Speed of particle कितना मीटर पर सेकंड होगा? Any rough guess? 70. स्पीड ऑफ पार्टिकल जो होता है, नॉट नीडेड ओवर हेयर, मैं जनरली बता देता हूँ, इट हैज बीन मेजर्ड एट 450 meters per second, which means they're actually very fast. अगर आप इसको विजुअलाइज करें ना, हमें तो लगता है कि इवन स्टिल एयर में पार्टिकल्स जो हैं ये इतने मूवमेंट नहीं करते, तो ट्रैवल एक्चुअली वेरी वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं तो हमें फील नहीं होता. सो लो डेंसिटी, जाहिर बात है मास कम होता है तो डेंसिटी लो है एंड दे कैन फ्लो. ठीक है, जिस तरह एयर कंडीशन का आउटर यूनिट होता है और इनर यूनिट होता है, बीच में वो हम कहते हैं ना गैस कम हो गई है या गैस जो है तो फ्लो करती है. ठीक है, इनर आउटर में ये फ्लो करती है. We'll talk about behavior of gas. It has been mentioned in the syllabus कि गैस के एक बिहेवियर होता है. अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस अ गैस ऑक्यूपाइज, व्हाट फैक्टर कैन अफेक्ट द वॉल्यूम? आप वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे चेंज कर सकते हैं? If I have a fixed volume, let's say if I have a fixed gas and I want to change its volume. What else? Heat, very important. You just heat the gas. So one of the main factors which can affect gases का behavior ये होता है कि अगर if you want to change the temperature, the gases will behave such that its volume will change. अगर पहले if this is 1 meter cube and you apply heat, then they will the particles will have greater distance. Why is it so? Temperature के साथ क्या होता है? ज़हीर के अलावा भी कोई input दे? Anyone? जी अहमद? With higher temperature, why does the volume increase? What do you think? Why? Kinetic energy. आपके आंसर में if there is no mention of kinetic energy, you don't get a mark. आप बहुत भी explain करें, the particles will move farther and this will happen, the volume will increase. No, they'll search for the word kinetic energy. जब भी टेम्परेचर की बात हो थ्रू आउट केमिस्ट्री, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, राइज इन टेम्परेचर आप जहन में रखें, एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू राइट काइनेटिक एनर्जी. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज which will cause the volume to increase. तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, it's a mathematical, it has mathematical importance. Directly proportional का मतलब क्या होता है? If temperature increases by 5 times, volume will also increase by 5 times. एक होता है dependent, कि one factor increases, the other increases. That's called dependent. एक होता है directly proportional, मतलब कि we know the math behind it. If temperature decreases exactly 4 times, then volume will exactly decrease 4 times. Okay? When you see this symbol, it means it has mathematical importance. Okay? इसको चार्ल्स लॉ भी कहते हैं. If you want to memorize, ये मैं कह रहा था, at higher temperature particles gain kinetic energy and then they tend to move farther apart. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बता दे. I'm going very fast here. अच्छा, the other factor is pressure. Pressure of gas is inversely proportional to volume. What does it mean कि मैं जब pressure increase करता हूँ, if I'm in, तो volume कम होता है, it gets compressed. ठीक है, अब तो खैर CNG stations discourage होते हैं. पहले जब ये common था तो I used to give this example.
सीएनजी स्टेशन पे हाई प्रेशर क्यों दिया जाता है? सो दैट द गैसेस ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंडर का साइज कम होता है, द कार हैज टू रन फॉर अ लार्जर डिस्टेंस, तो गैस को कंप्रेस करने के लिए वो 220 या 200 कहते थे कि आज प्रेशर 200 है। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट यू शुड हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड के 200 के आगे यूनिट क्या लगा होता है, वो वैसे बार्स होता है, एटीएम होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट एनीवे, this is how we write. Chemistry में we don't have to go through the maths too much, बस हमें ये factors पता होने चाहिए। The pressure and volume are inversely proportional. Boy's law, जाहिर बात है, pressure ज़्यादा होगा distance कम हो जाएगा, volume जो है वो कम हो जाएगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे जाएं। अच्छा, we have a question, ये last year का question है, anyone? It's a question from past paper. I'll be giving IGCSE और GCE mixed questions क्योंकि दोनों की practice, क्योंकि syllabus same है, so now we can expect they can interchange the questions. पहले I used to treat them बिल्कुल differently, chemistry में भी बहुत ज़्यादा difference था, physics में भी difference था, अब तो chemistry तो exactly same है, physics में थोड़ा सा difference है. So I'll be mixing questions. ये वैसे IGCSE का question है, but since it's part of the same chapter, you should be able to solve it. So it's a question from March 22. In which state does 1 dm cube of methane contains the most particles? No, not Zuhaib, anyone else? Hamad, आपको क्या लगता है इस पर? सबसे ज्यादा particles किसके पास होंगे? जी रयान, solid, ठीक है? You're right. Solid में सबसे ज्यादा particles होते हैं ना? 1 dm cube वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया था। गैसेस में सबसे कम होंगे, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं, सॉलिड सबसे ज्यादा। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। इफ यू आर नॉट आस्किंग आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। अच्छा, changes of state, pretty basic, we'll quickly go through it. You need to name these, इसके क्या नेम्स हैं? ए क्या है? मेल्टिंग, बॉइलिंग, सी इज कंडेंसेशन, freezing, E is sublimation. जी अहमद, व्हाट इज एफ? एफ क्या है? गैस टू सॉलिड, evaporation is liquid to gas. Solid to gas is sublimation, और गैस टू सॉलिड जो होता है दैट्स सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, टर्म्स याद होने चाहिए। मेल्टिंग जी, हाँ वो फर्क है। फर्क ये है, एनीवन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? यस, थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब देखिए, if I spill water on the floor, within few minutes it will evaporate. लेकिन I cannot expect the water to boil on the surface, right? क्योंकि boiling जो है, it has a fixed temperature, जिसमें complete change in state होता है, the state changes from solid to gas. ठीक है? जो evaporation होती है, it's just escape of high energy particles from the surface, and it can occur at any temperature. इवन आइस, बात वक्त बहुत ड्राई आइस हो तो उससे फ्यूम्स निकलते हैं, इवन दैट्स इवेपोरेशन, इट डजंट हैव अ टेम्परेचर, इट कैन अकर। दूसरा ये है, इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट होता है, मतलब जिस सरफेस से ये इवेपोरेट होते हैं वो सरफेस जो है कूल डाउन हो जाता है। दैट्स व्हाई ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन फॉर इवेपोरेशन। स्वेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू लोअर द टेम्परेचर। बॉइलिंग में कोई इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, वो खुद ही 100 पे हो रहा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अच्छा, सो इफ यू टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, when you see the word point, point का मतलब होता है temperature. Melting point is a fixed and constant temperature. अच्छा, melting constant temperature पे होती है. Solid changes to liquid, boiling is pretty obvious. What should I write?
fixed and constant temperature. So you have to use the word constant. Liquid into gas. कोई क्वेश्चन तो नहीं है. Impurity अगर आपके पास हो, impurity lowers the melting point and increases the boiling point. ठीक है. If you add impurity, for example, pure water जो है, it boils at 100. अगर उसमें आप salt डालें या mineral water, आपको क्या लगता है? Will it boil at 100 or 105? Mineral water 105. It has minerals in it. That's an impurity. इसलिए इसको mineral water कहते हैं ना. उसमें कैल्शियम वगैरह डाला जाता है for bones and teeth etc. And melting point lower कर देते हैं. For example, pure water melts at 0. If you add a little salt in it, then it will melt at for -5. Lowers the melting point. ठीक है. For example, बाहर countries में ये बहुत issue होता है कि driveway को they have to clear off the snow. So if बाहर का temperature जो है -3 है and there is snow on the surface, they'll not wait for the temperature to rise to 0. कि पूरे 2-3 हफ्ते वेट करें कि जी मौसम चेंज हो जाए तो तब ये मेल्ट हो जाएगा. What they do is they sprinkle ice and salt, which lowers the melting point till -6 या -4 etc. तो बाहर का टेम्परेचर अगर -3 भी है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है because melting point has been lowered. So just a brief example, impure water will boil at higher temperature. अच्छा, चेंजेस ऑफ स्टेट में we need to, इस पे एक आध MCQ आया हुआ है, not very common but it has been asked. It is about how to determine state from the temperatures. अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है, if it has melting and boiling point below room temperature पे उसका स्टेट क्या होगा? For example, melting point is 3, boiling point is 17 degrees Celsius. What will be the state at room temperature? Will it be solid, liquid or gas? कौन सा होगा? Gas. Do you get the question? Room temperature 17 पे वो boil हो रहा है, right? And the room temperature is above the boiling point. मतलब वो boil हो चुका है. So you are right. If melting and boiling point are below room temperature, then the substance at room will be gas. Which means कि इस वक्त हमारे पास room में we have oxygen gas because we are breathing in, ठीक है? So and we are exhaling carbon dioxide. ये सारे जो compounds हैं, carbon dioxide हो गया या कुछ elements हैं like oxygen etc. They have been already boiled. इनका melting boiling point क्या था? Room temperature से below था. जिसके अब ये substance है, it's a solid. It means इसका melting और boiling point room temperature से ज़्यादा है. अगर आप let's say कोई bottle of water है, water का melting point क्या होता है? 0, below room temperature. तो वो melt हो चुका है लेकिन अभी boil नहीं हो. ठीक है. So ये कुछ rules आपके ज़हन में होने चाहिए कि अगर melting and boiling point दोनों नीचे हैं room temperature से तो it will be gas. अगर melting below है और boiling above है, that substance will be at room temperature. It will be कौन सा state होगा? देखें, अगर आपके पास it will be liquid. ठीक है. अगर melting below है, देखें 25 degrees is the room temperature. ठीक है. There is a substance which melts at maybe 12 degrees Celsius and it boils at 50. तो room temperature पे ये क्या होगा? Has it been melted? देखें 12 degrees इसका melting point है.
रूम टेम्परेचर इज हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो मेल्टिंग कर चुका है, बट हैज इट बॉइल्ड? इट हैज नॉट बॉइल्ड, राइट? 50 पे वो बॉयल होगा, रूम टेम्परेचर पे वो होगा लिक्विड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग आर बोथ अबव रूम टेम्परेचर, मतलब वो रूम पे ना वो मेल्ट हुआ है ना वो बॉयल हुआ है, तो वो उसका स्टेट क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। फाइनली वन आंसर इज करेक्ट। चलें, दैट्स अ रिलीफ। ये आपको आता था? अच्छा, सी वाला आता था आपको, तो फिर इसका भी बताएं। यस अमार, यू आर राइट। व्हाट डू यू थिंक, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इज -101, बॉइलिंग इज -35। 25 डिग्रीज पे इसका क्या स्टेट होगा? व्हाट विल बी द स्टेट एट 25 डिग्रीज? इट विल बी गैस। -101, 25 जो है इट हैज मेल्टेड द सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट जो है -101 है, रूम टेम्परेचर ज्यादा है, बॉइलिंग से भी ज्यादा है, तो वो मेल्ट भी हो चुका है, बॉयल भी हो चुका है, तो रूम टेम्परेचर इट विल बी गैस। ठीक है, विल सॉल्व वन मोर एग्जांपल। यस अमर, यू आर राइट। आप बताएं, 25 डिग्रीज पे हैज इट मेल्टेड? मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है ना, 25 degrees पे it has not melted, and has it boiled? No, 25 is very low, so it means this is solid. Okay. What about this one? At 25 melting हो चुकी है कि नहीं? melting हो चुकी है। 25 degrees पे boiling हो चुकी है? नहीं, so it's a liquid. ठीक है। Yes, Samar, you are right, here too is liquid. We'll quickly discuss heat curve का कुछ idea है? नहीं, नॉट जुहेब जी, आपका नाम से बोलिए। नहीं, जुहेब नहीं है, जक्रिया जी। जक्रिया, व्हाट डू यू थिंक, हीट कर्व क्या होता है? क्या लिखा है? इट रिप्रेजेंट्स temperature of substance against time in different state. For example, I take crushed ice at -15 degrees Celsius. I place a thermometer, तो thermometer मुझे बताएगा कि the temperature is -15. If I provide heat, what type of graph do you expect? Okay, what will happen to temperature? It will go up, right? Straight line होगा कि curve होगा, किस तरह होगा? Is, and which type of curve, like this or this? The first one, that's wrong. नहीं, ये भी गलत है, बीच में वो भी गलत है। ठीक है, मतलब कि like this, straight line, then इस तरह होगा। You're right, actually. It's not a straight line. Remember, whenever you plot temperature against time and you are constantly providing heat, तो वैसे तो माइंड यही कहता है ना कि बस मैं constantly, if I'm providing heat, it should just rise, right? कि बस ये rise करना चाहिए, but it has been clearly observed, there are observations कि टेम्परेचर डज नॉट राइज कंटिन्यूसली, ये एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। ऑल्दो यू आर प्रोवाइडिंग हीट
लेकिन ये रुका होता है, टाइम गुजर रहा होता है बट टेम्परेचर राइज नहीं होता। हीट भी चल रही है but it stops for a while and then it starts to rise. फिर again it stops for a while and then it starts to rise. ठीक है? So remember, under different states there is never a straight line or never a continuous curve. It always occurs in steps. Now, being a chemistry student, you should be able to describe what is going on. Why are there small stops, small pauses? क्यों होते हैं temperature? Melts, but technically हम क्या कहेंगे? If you want to give more technical, change of state, almost there एक और word हमने add कर. Yes, yes, Zaid. Releases नहीं, release तो नहीं हो रही, heat is being absorbed. हीट तो एब्जॉर्ब हो रही है. सो इफ आई राइट द वर्ड रिलीज, मेरा तो उधर ही मार्क कट जाएगा. यू आर ऑलमोस्ट राइट. बेसिकली व्हाट हैपेंस, डू यू हैव एनी इनपुट वरीशा कि व्हाट गोज ऑन? अच्छा, actually what is going on, we'll quickly finish this topic. A to B, if you provide heat, if you provide heat, the heat is absorbed to increase temperature of substance, which means kinetic energy is increasing. Temperature link is always linked with kinetic energy. तो यहाँ पे kinetic energy increase हो रहा है. What happens at 0 degrees? And now the heat is absorbed to do what? मतलब ज़्यादा technical अगर मैं word use करूँ, melts. But what happens during melting? Particle absorbs heat to do what? Melting तो visible है ना. What is going on in the particles? Forces of attraction are broken down. Bonds are broken down. Forces of attraction are overcome. ठीक है? Yes, Amar, you're right. We have to talk about bond breaking. So from B to C, there is bond breaking involved. अगर आप कहेंगे B to C just melting, नहीं, you have to be more technical, more specific. तो melting तो हो रहा है, but technically bonds do train and kinetic energy does not change. So as long as the bonds are being broken down, so from B to C, the kinetic energy is constant, so temperature is constant. Once all the solid bonds are broken down, so C to D कौन सा state होता है? Liquid state. ठीक है, ज़करी इधर देखिए. And if you provide heat, heat is absorbed to increase temperature of substance. तो यहाँ पे kinetic energy क्या होगी? C to D. अगर temperature increase हो रहा है, so kinetic it increases. What happens from D to E? Evaporation, boiling. यहाँ पे मैं evaporation नहीं कहूँगा. At 100 degrees there is boiling, which means कि again what is happening to the heat? Bond breaking again. Second phase. पहला solid के bonds break हो रहे थे, तब temperature constant था, particles were waiting for the bonds to break, तो kinetic energy में कोई increase नहीं आ रहा था. The second bond breaking occurs at boiling. फिर दोबारा temperature stop हो जाता है. I'll share the video in the Google Classroom. आप उसको देखें तो वो इसका practical lab की video है, वो आप देखें. ठीक है? Then E to F, heat is absorbed to increase temperature of gas. ठीक है? ये दो questions solve करें, then we'll conclude for today. June 22, which answer do you think is correct? जी रयान, ट्राई कर. पेपर में इतना करीब आप नहीं बैठे होंगे. अच्छा, पेपर आपने अलग से देना होगा, कैमरेज नहीं अलाउ करते इतना करीब बैठने. जी हाँ, सुना है मैंने काफी. अच्छा, इसमें विच आंसर?
freezing के दौरान it becomes ordered, but when particles freeze, do they gain energy or lose energy? Lose. They stop moving. They lose energy. When you melt, they gain energy. देखिए melting के दौरान it starts movement, but freezing के दौरान it stops moving. तो वो उसकी energy not completely stops, but उसका motion खत्म हो जाता है. Yes, it is B. What about the second MCQ? जी, what do you think? आपका नाम क्या है? Ahaz. RS. Ahmad, you are back at it again. अच्छा, so इसका आंसर क्या है? A. Freezing के दौरान it becomes solid and energy is released. Why is B wrong? यहाँ तक तो statement ठीक है. It's not called evaporation, it's called boiling. C में क्या issue है? When a solid changes to gas, the process is called sublimation. When a solid melts, they यहाँ तक सही था, more energy. ठीक है? More energy, less is wrong. Rest of it will continue in the next class.